So there was one thing told to me about 10 years ago by a person. That person is now my Shiksha Guru. The one whom I listen to, the one whom I follow instructions from. Guru is someone whom you follow instructions from. So that's why we be very careful in choosing the Guru. Well-wishers can be many. You will feel that they are your well-wishers. You may not feel, but Guru has to be chosen very carefully, whether it's a Shiksha Guru or a Diksha Guru. You know the difference between these two? No. Okay. Do you know who's a Guru? Yes. Who's a Guru? Guru is one who takes you closer to Krishna. Very nice. What is the characteristic of a Guru? One characteristic. So this is his identification, that someone who is taking us closer to the Lord. Identification. Characteristic क्या है? एक गुरु का. One. For you to, He is a devotee of the Lord. very nice. Yes. Characteristic. Yeah. But how will you know he's a devotee of the Lord? That's another question, right? Is practicing what they're preaching. He's practicing what they're preaching. Okay. So how would you know? He may be showing you that he's practicing. If you are on the same path, you will know. Very nice. So if you practice something, you know that he's practicing too. Swajati. Yeah. So there is a like-mindedness connection. Okay. And any characteristic which endorses a guru, that he's a guru. He has clarity. Very nice. What else? He or she has clarity. Very nice. Yeah. Yeah. A They female have, can also be a guru. Yes, absolutely. Yes. Yeah. they have answers to your questions. Answer to the questions. Okay. Because otherwise, why would you accept somebody as guru if the questions you are puzzled by or not able to get answer? If they Very are able to nice. satisfy that inquiry, Convince you. Yeah. then Okay. Very good. Anything else? There's one very important characteristic which was shared by someone to me. A guru does not have any anartha. You know what is anartha? Anything that you have liking for that satisfies your senses. Very good point. Senses. So what does that mean? That someone who does not have anartha. That person is not swayed by the senses. Very good. So he doesn't get carried away by any of his senses. This will come further in our discussion, but I'm just giving you a prelude. How would you know someone is not getting carried away by his senses? Example, practical. How would you say, for example, someone you have, whom you have like-mindedness and things like that, and you think that, okay, I should surrender to this person. Surrendering means उसके पैर के नीचे ऐसा दंडवत करके सोना, उसको सरेंडर नहीं बोलते. जो वो बोलता है वो करना है, उसको सरेंडर बोलते हैं. ये डीप है काफी. ऐसे नहीं कर सकते आजकल की दुनिया में. बहुत मुश्किल है. जो कोई वो बोलता है, जो कुछ भी बोलता है, मैं वो करूंगा, ये सरेंडर होता है. It's not easy. So one guru, this is an example I'm giving you, the live one. One guru told his disciple that
you take care of all the animals, like Goshala is there, then there are peacocks, and there is a. So basically, what they were doing is they were getting all the troubled animals from outside, and they were keeping them in their little farm. Okay. So the guru told them, not only you keep all the animals which are, how do you put them, bona fide or authorized animals like cows or peacocks or all those animals, but you should keep donkeys also. अभी डोंकी को कौन पेट बना सकता है, आप बताओ? गुरु ने बोला है शिष्य को, करोगे? डोंकी को पेट बनाओगे? क्वेश्चन है, वेरी डिफिकल्ट ना? कैसा दिमाग में कैसा आता है? वो गधा खड़ा रहता है रास्ते पे, कुछ नहीं करता. यू माइट हैव सीन इन इंडिया, राइट? ऑस्ट्रेलिया इट्स हार्ड टू फाइंड. इंडिया में बहुत दिखता है ये. सही रास्ते पे खड़ा रहता है, कुछ नहीं करता. उसको मारो फिर भी फर्क नहीं पड़ता. कोई मूव करके लेके जाएगा, उसको कुछ करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको. उसको कैसे पेट बनाओगे, ये सोच के, तो वेरी इंटेलिजेंट डिसाइपल, उसने वो पेट बनाया. और उसके फार्म में गधे थे जिसको वो सर्व करता था. कैन यू बिलीव इट? जस्ट बिकॉज हिज गुरु टोल्ड हिम. ये सरेंडर बोलते हैं इसको, इस चीज को. आपको सही नहीं लगेगा वो बात, क्यों कर रहा हूं मैं ये. आप क्वेश्चन करो, कोई बोलेगा "अरे क्या कर रहा है, गधे की सर्विस कर रहा है"? वो बोलेगा ना मेरे गुरु ने बोला है, कैसे हो सकता है? इट्स डिफिकल्ट, राइट? व्हाट हैपेंड आफ्टर a few months? There is, yes, Kalpesh. Other way around, हाँ, if guru, if अगर वो गधा है उसके पास ऑलरेडी, और गुरु आके पूछा है तो गधे की सेवा क्या करे, गधे को जाने दे करके. तो वो भी उसका द पॉइंट इज दैट टू डू व्हाट योर गुरु इज टेलिंग यू. तो वो उसने वो भी कर दिया, उसे जाने दिया गधे को. तो वही गुरु ने बोला, ये सरेंडर. क्वेश्चन इज हाउ सरेंडर कैसे करते हैं? सरेंडर मतलब जो उसने बोला मैंने वो किया. लेकिन ये अथॉरिटी है ना किसी को देना, इट्स अ बिग अथॉरिटी. और अगर ये नहीं दी तो वो गुरु नहीं है आपका. बेसिकली वो दीक्षा गुरु बोलते हैं उसको. दीक्षा गुरु का डेफिनेशन ये है कि यू आर सरेंडर टू दैट गुरु, सो व्हाटएवर ही सेज यू डू इट. सो ये किसी को आप रिमोट कंट्रोल दे दिया आपने, आप लिटरली. दिस इज गुरु शिष्य रिलेशनशिप. आंख बंद करके मैं तेरी बात मानूंगा. इसके लिए इसमें बुद्धि बहुत जरूरी है. ऐसा ही आप किसी को गुरु नहीं बना सकते. शिक्षा गुरु का भी महत्व उतना ही होता है, लेकिन शिक्षा गुरु इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, वो शिक्षा देता है. शिक्षा अलग है, इंस्ट्रक्शंस अलग है. डज मेक सेंस? इंस्ट्रक्शंस मतलब संस्कृत में कैसे बोलेंगे? आज्ञा, आज्ञा, आदेश, आदेश. है ना? सो इंस्ट्रक्शंस, यू डू दिस, यू डू दैट, यू डू दिस, यू डू दैट. वो शिक्षा गुरु नहीं. शिक्षा गुरु सिर्फ शिक्षा देते हैं, नॉलेज. तो ये फर्क है इन दोनों. सो अंडरस्टैंड दिस. शिक्षा गुरु इज, बट वो जो शिक्षा दे रहा है वो फॉलो करना है. इसके लिए उसके पीछे गुरु. और वो गुरु कौन होगा जो वो दे रहा है तुमको? उस गुरु का मतलब है शिक्षा जो दे रहा है उसमें अनर्थ नहीं है. दिस इज द फुल अंडरस्टैंडिंग. वो अनर्थ कैसे नहीं पता पड़ेंगे हमको, वो समझना है. आप टेस्ट भी कर सकते हो, बट यू कांट बी someone who is carrying anartha and testing someone else for anartha. मुश्किल हो जाएगा तुमको टेस्ट करना उसको. से फॉर एग्जाम्पल तुमको पानी पूरी को देख के मुंह में पानी आता है, एग्जाम्पल. आप किसी को टेस्ट कर रहे हो, कैसे टेस्ट करोगे? क्योंकि वो दोनों को पानी आ रहा है मुंह में, पता कैसे पड़ेगा? अंडरस्टैंड? ईयर्स, ये
जिभा, हाँ, यस। तो मुझे सॉरी यार, लेकिन ये थोड़ा पर्सनल, अभी मैं लेट हुआ, अब मुझे सॉरी बहुत यार, लेकिन लेट आर्ट, हुआ ना। हाँ मैं अभी खाना खाने गया था, किसी के घर पे बुलाया था, हाँ, तो ठीक मैं और है, सुर भी गए थे वहां पे। वहां पे हाँ सब कुछ रखा था, हाँ, दारू नॉनवेज सब रखा था। ठीक है, और मुझे लगा था कि कल पे शायद फिसलने वाला है, अच्छा। पर मुझे नहीं पता था। मैं वहां पे जाने, मैं फुल मतलब फुल ये चल रहा था, हाँ, मेरे मुंह में पानी भी नहीं आया। सी दैट मीन्स वो जो आ, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारे मुंह से टेस्ट गया उसका, हम्म। टेस्ट गया उसके हम्म। मुंह। टेस्ट की, टेस्ट का एक बहुत एक अजीब सी चीज है टेस्ट, हम्म। और डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा हम्म। इमीडिएटली नहीं समझ में आता। अवाकाडो एग्जांपल हर किसी को देता हूँ मैं। अवाकाडो मैंने सबसे पहले 2006 में खाया था, और सब लोग बोलते थे "ये बहुत अच्छा फ्रूट है", आई मीन वेजिटेबल जो भी बोलो। मैंने खाया, "ये क्या है ये? इसको कैसे अच्छा बोल सकते हैं"। थोड़ा थोड़ा उसका आफ्टर इफेक्ट मेरे को नारियल के जैसा आ रहा था, बॉम्बे से आया था ना मैं अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में, तो थोड़ा थोड़ा आफ्टर इफेक्ट है नारियल के जैसा, लेकिन टेस्ट तो एकदम इट्स नो यूज। सबवे में वो देते थे वो लोग अवोकाडो लगा के, वेजी डिलाइट में अभी भी देते हैं शायद। सो दैट वाज टेस्टलेस, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ आई अंडरस्टैंड। Once a very, very close friend of mine who's a devotee came to me. He wanted to have avocado milkshake, which is very nice actually, very tasty. He was very fond of that. So I came to know about the taste of avocado over a period of time. Taste ऐसा है, लेकिन जाने में भी उतना ही टाइम लगता है उसको। लेकिन अगर जल्दी जा रहा है ना, ये कृपा होती है भगवान की। और सबसे ज्यादा इसका जो इफेक्ट जिससे आता है ना, वो है संग से, एसोसिएशन, उससे आता है इसमें इफेक्ट। सर मेरे एनीवे, संग वाले सब वैसे ही है। संग ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फिजिकल संग हो आपका। हाँ। संग आप किससे करते हो ये आपके दिमाग में होता है। हम्म। आप बैठ सकते हो किसी ऐसे आदमी के साथ जो दारू पी रहा है, लेकिन आपके मन में चल रहा है कुछ और, कीर्तन चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो आप भले ही इसके साथ बैठे हो, लेकिन संग नहीं किया आपने उसका। यू नो व्हाट आई मीन। हम्म। संग आपके ऊपर है, आप किसका संग करना चाहते हो। इट कांट बी फोर्स्ड। या क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम्स थे, और मैं भगवद गीता की बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो संग उसका है जिसमें आप इन्वॉल्व हो। तो एक होता है संग लेना, एक होता है संग देना। एसोसिएशन, तो अगर खराब एसोसिएशन है तो लेनी चाहिए, देनी चाहिए। और अगर अच्छी एसोसिएशन है तो लेनी चाहिए। सो दैट इज द चॉइस यू हैव, जिसको फ्री विल बोलते हैं। ये चॉइस होती है तुम्हारे पास हर वक्त। और ये सिर्फ, इट्स नॉट अबाउट पीपल। एसोसिएशन इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल। Association could be about anything for that matter. Food is also an association. You are associating with the food. Movie, that is also association. So eyes are getting associated. Music. Music, your ears are getting associated. So anything for that matter you are getting associated with is association, not just people. वो एक concept है. I have to understand that. Okay, coming back. तो ये जिभा, जिभा का जो वेग होता है किसी का, कुछ खाने का, कुछ पीने का, टेस्ट करने का, वो वेग खुद को ही पता पड़ता है। अब अगर हमको पता पड़ता है कि वेग मेरा हो गया, ये सही है, मुझे ठीक लग रहा है, 100% बहुत डिफिकल्ट होता है वेग को कंट्रोल करना। लेकिन अगर हो रहा है धीरे धीरे, कम हो रहा है किसी चीज में से, हमको निकल रही है आसक्ति, निकल रही है उसमें, टेस्ट निकल रहा है, तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट ये बंदे को तो है ही नहीं उसकी आसक्ति। मैंने उसके आके 10 तामझाम लग दी, वो कांट इवन, ही डजंट फील। वो वो यही बोलता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत प्रसाद लगे, दैट्स इट, बट ही नॉट ऐसा अनकंट्रोलेबल, ऐसा उसका नहीं। Greed is not there. दैट अनकंट्रोलेबल लस्ट फॉर हैविंग समथिंग, वो अनर्थ होता है। दैट मीन्स यू कांट, देखने के बाद वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये आंखों और जिभा की बात हो गई। दूसरा ईयर्स का भी एक है, साउंड। साउंड वाइब्रेशन हमको वही अच्छे लगते हैं जो हमको प्लीज करते हैं।
Someone who praises us is very sweet. Someone who speaks bad about us or says some ill things to us, pleasant नहीं होता है कान को. तो जो बहुत प्लेजर देने वाली बातें हैं उसको संस्कृत में स्तुति बोलते हैं. स्तुति, किसी की स्तुति करना मतलब उसकी प्रेस करना, स्तुति. और शास्त्र says that स्तुति is a कन्या, because everything that you have has a body. एक पर्सन है वो. That's how our scriptures define everything. ego जो अहंकार है उसका भी एक फॉर्म है. हर किसी का एक फॉर्म है. तो स्तुति कन्या है. अब उसका डेफिनेशन बहुत अच्छा है. इट्स वेरी नाइस एक्सप्लेन. स्तुति एक कन्या है. शी इज ऑलवेज अनमैरिड. उसकी शादी नहीं हो सकती. स्पिंस्टर बोलते हैं इंग्लिश में जिसको. एक बैचलर है और एक स्पिंस्टर है. बैचलर लड़के को बोलते हैं, स्पिंस्टर लड़की को बोलते हैं. शी इज ए स्पिंस्टर कन्या. शादी नहीं हो सकती. क्यों? रीजन है उसका. क्योंकि स्तुति जिसको पसंद करती है ना, तो वन, स्तुति मतलब प्रेज. या प्रेज जिसको पसंद करता है ना, वो प्रेज को पसंद नहीं करता. Try to understand this. लेकिन जो प्रेज को पसंद करता है ना, प्रेज उसको पसंद नहीं करता. दिस इज वेरी डीप. दैट्स व्हाई स्तुति इज ऑलवेज स्पिंस्टर. उसकी शादी नहीं हो सकती. बिकॉज द वन स्तुति लाइक्स, दैट पर्सन डजंट लाइक स्तुति, डजंट वांट स्तुति. उसको प्रेज चाहिए ही नहीं. उसको वो बहुत पसंद करती है. लेकिन जिसको चाहिए ना, वो स्तुति, उसको स्तुति पसंद नहीं करती. That's why she always remains spinster. उसकी शादी हो ही नहीं सकती स्तुति. So someone who doesn't like praise, who doesn't want praise, स्तुति, जो जो भक्त होते हैं ना, जो devoted to the Lord, to the जो spiritually inclined होते हैं, ऊपर होते हैं, advanced होते हैं, उस स्तुति उनको पेन देती है. कोई उनको प्रेस करता है ना, उनको मजा नहीं आता है. They feel irritated. I mean, they don't show, they don't get angry, but they stay away from it. और जिसको अच्छा लगता है ना, वो अनर्थ पता पड़ जाएगा. तो गुरु के लिए ये बहुत जरूरी है. आई मीन, गुरु बनने के लिए नहीं, गुरु चूज करने के लिए. हमको गुरु बनना नहीं है. वी हैव टू try and find someone who can guide us, because guru only can take closer. So I was just giving an example how to identify a guru. Okay, coming back to Guruji, what happened to the guy who was giving shelter to them? donkeys, yeah. So he kept on serving because his guru told him. So they were not doing too well on the farm. They had, this. They had built villas, they had built rooms, but no one was, coming there. No one was booking rooms. It was not doing that well. So there was a group of yogis who different places from the world. There are yogis who practice yoga, like Ashtanga yoga and this, that. There are about 800 yogis, quite a big bunch. I'm just giving a ballpark figure, around massive group of yogis. So they came and they were visiting every place. They were going to Kashi, हिमालयस में भी गए, कहीं पे ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, सब जगह गए कि हमको एक ऐसी जगह मिले जहां पे there is, that vibe is perfect for yoga. So how does that vibe come? That vibe comes by service. That's the fundamental of any place. Have you visited some temples in South India? Yeah. Pati? Yeah. Which one have you visited? Tirupati. Tirupati.
Very nice. Any other temple in South India? ISKCON in Bangalore. Very nice. But you see the older temples like Tirupati, for example, or older temples in South India, which are like hundreds and thousands of years old, you'll feel a different vibe there. Totally different vibe. It can be anyone. The deity can be anything. Krishna, Shiva, whoever the Meenakshi, any deity. But the oldest temples, you'll feel that vibe because they've been served for so many years. That vibe is there. That service brings in. Because there's a connection between the servitor and the service. There is a connection, deep connection. So what I'm trying to say is that the service builds that kind of a vibe. So when these yogis came to this place and saw the service attitude of people towards the donkeys, they were mesmerized. They couldn't believe that the donkeys could be served that way. And they booked that place forever and ever. Now that place, it's very hard to find a room there. It's booked out throughout the year by the specialized yogis. This is how it turned things. So the disciple who was trying to generate that place into a place for yoga, his own words, he said, I could not understand the instruction of my guru. But when I saw the reflection in reality, I got the realization that why Guru's instructions are Krishna's instructions. And that place, would you like to know what place is that? Spoiler alert, you've told the story before and I remember. River. Yeah, very I nice. remember. It's the Govardhan Eco Village in Wada. And the Shishya is Gauranga Das Gauranga Prabhu. and the Guru Guru is is Radhanath Swamiji. Radhanath Swami Maharaj. Yeah, Can I ask a question? Did yeah. Radhanath Swamiji have that foresight that that doing How this will will give how benefit? can we tell? You tell. Mm, How can we tell? true. It's hard, right? How? So this is where the Guru Tattva is. We don't know. That's why we follow. We don't ask questions. And that thing only comes by surrender. But surrender to be done to a person who doesn't have anartha. And to find such a person who doesn't have anartha, that charity begins from home. So just an example. Interesting, very interesting actually. Okay. So coming back to our chapter 3 verses. What is, again, I'll go back to the fundamental so that we understand the yoga ladder. What is the difference between non-scriptural enjoyment and scriptural enjoyment, and what they are called in Sanskrit? Non-scriptural is Bhauma Sukha. Hmm. Scriptural is Karma Kanda. What is the difference? The dependency of the Dependency provisioning. of the provisioning. Yes. Very nice. Any other aspect? Very nicely explained. Thanks, Rishi. So the provisioning is done at the dependency on the source. I'm not independent. I'm dependent on something. And what other aspect in Bhaumasukha and Karma Kanda? Yes, one very important aspect. Are you asking about the difference Yeah. So what between is the aspect? Yeah. So one difference is that you dependent? realize that there is a dependency. What is the other aspect? The importance of yagna. Very nice. Yajna. So yajna is introduced in Karma Kanda. Karma Kanda. Okay. Clear so far the difference?
Bhauma Sukha and Karma Kanda. Okay. And what is the common factor between these two? Sukha, Very good. The enjoyment. enjoyment, Sukha of who? ourselves, Ourselves. Ourselves who? this body, The body. Correct. Correct. Not Atma Sukha, this body, yes, bodily enjoyment or material. or material or sense gratification. ये word बहुत सुना होगा तुम लोगों ने. Sense gratification. Sense gratification. Sense gratification means senses को please कर. Please karma. That's it. That is the whole purpose of these two activities. Bhauma Sukha and Karma Kanda. The only difference is that Karma Kanda involves Yajna and it also involves the understanding that I am dependent on a Supreme. Very nice. So we have understood these two parts. Very good. Let's go one above that. What's the first, the second rung of the yoga ladder? The first rung is Karma Kanda. Sakama karma yoga. Sakama Karma Yoga. So what is Sakama? I remember the um, analogy 50 Okay, 50. very 50% nice. your sukh and 50% for the Lord. Very So nice. 50-50. Yeah. So what are those words? Sakama Karma Yoga. Which Sa one and calm. denotes? Sa Yeah. means myself, and I think calm means, or sakam Sa, means my desire. Maybe. no. No? Sa means full. Oh, okay. Okay. Desire means desire. That Calm. is Calm means Kama. desire. Kama is desire. Yeah. Mm-hmm. So full of desire is Full of Sakama. desire. Okay. Yeah. Mm. So okay. So Sakama Karma. Karma means action. So any action which Action is that full of generates karma. desire. Yeah, okay. Uh, every action generates karma. Okay. So when we say karma kanda, it also generates karma. Then what Bhaum, is Nishkam karma? Bhauma Sukha also generates karma. No, generates reactions. Maybe that is what I'm trying to say. Everything generates reactions. Yeah, Every Nishkam. karma, every action has an opposite reaction. That's what Newton also said, right? Agreed, but we talk about Nishkam karma yoga later Oh, on. that is above. अभी वो सीढ़ी में टाइम है. पहला ठीक सीढ़ी है. है सकाम कर्म में. तो सकाम में full of desire. Desire. Sakama karma is action. Of course, it has reaction, but we haven't not come to that point yet. Reaction भी बाद में आएगा. So karma is action. Action which is full of desire, but it has one very important word at the end. That is the key Yoga. here. Yoga. 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 Just connecting you to the Lord. Exactly. So here there is an aspect of pleasing the Lord. इसमें ये difference है. So कर्म कांड पे आ गए एक बार. कर्म कांड और सकाम कर्म योग बहुत differences है. Major difference is yoga. That means here there is an aspect of serving the Lord for His pleasure. ये इसमें component है ये वाला. Major component. Although it is full of desire. Sakama karma yoga. So that means that you are serving the Lord for His pleasure, but you also want your pleasure. That's why it is 50-50. Adha. So you go, the Lord serve with full heart. पूरा उसको सर्व करते हैं, लेकिन in the background में ये है कि मुझे कुछ चाहिए इसमें से. That is सकाम कर्म. गलत सही की बात कुछ नहीं कर रहे हैं अभी. There's nothing right or wrong here. We are trying to understand different levels of yoga. So this is Sakama Karma Yoga. Understood this one? Clear? We have taken an example also of this one. Have we? Yeah. If you can think of any example you can share. Your personal experience, if you have, you can share. Yes. आज का ही है फिर से. तो सुरभि was also with me.
Surabhi was having whatever she wants to have. She's 18 plus now, so I don't stop anybody doing whatever they want to do. So one of my friends said, and I did not bring it in home. I don't like it, right? Like, my friend said to Surabhi, "Do you want to take away?" And she goes like, "Yes." Then she asked me, "Can I take away?" I don't know what to say. I say, "Look, I don't bring anything in the home." She goes like, kind of thing. I said, "Then will I allow to get a separate pan for you now?" Then she goes like, "Okay." Then she has got it. I don't know how my reaction will be when she is going to make it. So, what So, is this, Prabhuji? In terms of my perspective. so so let's go back one step. Try to understand this first. Every living entity is different. Number one. Okay. Understand this first. Every living entity has its own journey. Okay. That is one thing. Understand. So you may be related to someone in this lifetime. You may not be related to that person in the next lifetime or the previous lifetime. Make sense? This is the concept of the soul. Because soul does not have only this body. The relationships are only with this body. Making sense so far? So that concept has to be understood. Clarity. Okay. You have to think with that. Now, next step. You can always share your experience, but you cannot impose your will upon others. Unfortunately, it's hard and it's not very pleasant. When a person, when a child is little, you can guide that child until a certain age. But then the children have their own association by which they pick up certain things which they feel right. Okay, so you have to understand that part also. The only thing you can change is your own self, nobody else. Yeah. Okay, so don't be harsh on yourself or others in terms of feeling that way, that guilt, unnecessary guilt, because the journeys are different. You can always share your experiences. You can always share your knowledge. You can discuss things amicably and with reasons. Yeah? Say, for example, you say that, no, I don't bring meat to my house. So it's that is like, okay, you are doing something. Okay. Next is why? Do you know why? I mean, I'm not asking you, but do we know why? If we know why, then we should be convinced this is the right thing. Yeah, one thing. And when we say that with conviction, with that point, we should be able to analyze also and give that right conviction to others also, which I'm convinced of. You can only share, but now other person also to get convinced of open saying that may not be possible. You may have, and that makes us unique, right? So you have developed a perception or an opinion based on your realization or your experience. But that is yours. Exactly. Yeah. Other person might have another opinion, and that makes us unique, right? If you and me have the same opinion, one of us has to be redundant. जरूरत क्या है दूसरे की? You see, that's why there are opinion different. The difference in opinion is always there. It's evident. It has to be there. Matabhed. That's called in Sanskrit. Matabhed. Matabhed is okay. Accept that matabhed. There's no need to get
upset or any kind of back thoughts on this. It's normal. That's it. Simple, right? Is it making sense what I'm saying? Yeah. And then it's your intelligence how to deal with it. So nothing right or wrong, but share your own realizations if it is possible. That's it. So Sakama Karma Yoga is not about, so all these steps are for our own self. It's not for anyone else. We can't let anyone climb this ladder, can we? We only choose. Yeah. You will only choose what is right or wrong for you, of course, by looking at others or taking other ones, because the knowledge comes from the outside. So if you are practicing something and someone sees you practicing something, he might be inclined to know why. And if that matches at some point, you'll be surprised that the other person also starts following you. But you don't force the free will of someone or don't try to push. That's called balodpadita. That's what the word is. Forcing someone to do something. Forcing someone even to do spiritual practices. That is force. That is not right. It has to be swabhaviki. Naturally, you should be inclined. So when we are doing this exercise, we are trying to analyze our own selves, trying to find our place on the yoga ladder. And how can we reach the top? That if that is the goal, then we are on the right path. But if it is for understanding also, then also is okay. We will ultimately be interested and inclined to reach at the top. Okay, Sakama Karma Yoga. Is it clear? Next step about that. Nishkam Karma Yoga. Nishkama Karma Yoga. So there is a difference in Sakama and Nishkama. What is that? Nishkama. Nish means no desire. Nishkam means no desire. Correct. So something, any karya that you do without any desire is Nishkam Karma Yoga. So any karya will be Nishkam Karma. Yeah. In association with the Lord. But if you say Nishkama Karma Yoga, That then is you are acting to please the Lord without without any desire. desire. Yeah, that's the whole understanding of Mm. The Nishkama full Karma Yoga. service to the Lord. Doesn't make sense? Yeah. Selfless or without any personal desire, you are serving the Lord for His pleasure. That's called Nishkama Karma Yoga. Very, very good position actually. Very, very high position. Yeah. Okay. Does it have to be 100% of the time? Or any activity that you do without desire contributes towards your Nishkam Karma Yoga? Very good point. Because when you think about Nishkama Karma, so that's why when you take that yoga out from it, first is Nishkama Karma understanding. That am I able to do some work without my person? Otherwise, you always see, na, mera kya hai iske andar? Hmm. You see, it comes from that. So when any business or any work, any job you do, what is in for me? Yeah, exactly. Otherwise, you can't work, right? That's how this world works. If you don't do that, you will be left with nothing. Because that's how the world functions, right? Give and take. तो मेरे लिए क्या है तो मैं काम करूं मेरे को ये चाहिए इसके लिए मैं करूंगा ये यू डू समथिंग फॉर समथिंग मेरे लिए मेरे को मिलेगा इसमें से इसलिए मैं काम करता हूँ सो व्हेन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ निष्काम कर्म अंडरस्टूड कि मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे इन टर्म्स ऑफ सर्विंग द लॉर्ड बाकी तो आपको कम करना ही पड़ेगा ना वर्ल्ड में सो यू कैन नॉट बिकम अ निष्काम कर्मी वेरी हार्ड वो बन गए तो it's very difficult actually you don't want anything from anyone but then how will you survive वो भी सोचना पड़ेगा आपको if you are able to survive with that साधु जीते हैं ऐसे कई कुछ नहीं चाहिए होता मैंने देखे हैं ऐसे जो वृंदावन में कई बार वो एक उसका पूरी संपत्ति और ऑल द एसेट बोलते हैं ना एसेट्स
उसके पास एक डिवोटी के पास असेट्स खाली एक हाथ गाड़ी के ऊपर उसने ना ऐसे करके ऊपर से अपने लिए शेड बनाया है, जैसे कवर करने के लिए। वो हाथ गाड़ी लेके खाली वो वृंदावन में गिरिराज जी की परिक्रमा करता रहता है बस। साधु है, वही करता है वो, लाइफ लाइफ वही करता है वो, पूरा दिन वही चलता रहता है बस, गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, बिकॉज ही सो अटैच्ड टू गिरिराज जी, गिरि गोवर्धन, दिस इज कृष्णा, और मेरे को इसी के आसपास घूमना, एंड दैट्स हाउ ही फील्स प्लेजर। इसकी सर्विस है, एक ही जगह पे 108 बार दंडवत करता है, फिर आगे बढ़ता है, 8 बार दंडवत। अब खाने पीने का क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, वो उधर जाके सोता है, वो हाथ गाड़ी साथ में चलाता रहता है, उसमें अंदर सो जाता है। कपड़ा एक ही 2 वस्त्र है उसके पास, वो धोके हुए पहनता है। ब्रश करने के लिए नीम तोड़ के उसका ब्रश कर लेता है। खाने के लिए प्रसाद मिलता है, इतने मंदिर है बीच में, तो खाने का प्रॉब्लम नहीं है उसको, हर जगह उसको थोड़ा बहुत खिचड़ी कुछ प्रसाद मिल जाता है, कहीं से कोई फल मिल जाता है, फल तोड़ भी लेता है कभी, कभी कभी फ्रूट्स का पूरा दिन रहता है, पूरा फ्रूट्स का दिन रहता है उसका, अमरूद ये वो ले लेके तोड़ के वो खाता रहता है वो। एंड समटाइम्स वो इसमें मंदिर से ले लेता है प्रसाद, मिल जाता है उसको, साधुओं को प्रसाद। ही इज लिविंग देयर, ही इज डूइंग दैट फ्रॉम लास्ट 20 years, सो हैविंग नो प्रॉब्लम एट ऑल, फ्रेश है एकदम वो, ऐसा उसके पास में कोई ऐसा नहीं, भिखारी नहीं लगेगा आपको, खुशबू आती है उसमें से बहुत, चंदन की, बट ही अर्न्स नथिंग, कंप्लीटली सरेंडर्ड, किसी से भी कुछ लेता था ना, नहीं है। आप उसको बोलोगे कि मेरे को थक गया हूं मैं, वो आपको बोलेगा मेरी हाथ कड़ी है, मैं तो लेके चलता हूँ गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। मैनी पीपल टायर्ड, वो बिठा के लेके भी जाता है, कोई पैसे तो मेरे को पैसा नहीं चाहिए। अब वो कोई उसका वो करेगा तो वो उसको फ्रूट्स वगैरह लेके दे देता है, वो फ्रूट्स स्टॉक हो गया उसका, मतलब कल का मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। दिस इज हाउ ही लिव्स, सो देयर आर पीपल लाइक दैट, आई हैव सीन दैट, वो जीते हैं, वो खाली वो प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, उसके हिसाब से वो प्लेजर उसका, दिस इज हाउ ही इज डेवलप्ड, दिस इज डिवोशनल सर्विस फॉर द लॉर्ड। ऐसे अलग अलग जगह पे बहुत जगह मिलेंगे आपको, सो you start thinking that these people have actually understood that if I please the Lord, He will maintain me. I don't have to beg. I'll get automatically everything. They live like that. Modern day sadhus, and I'm not talking about people who are not educated. Huh? I'm telling you about people who are highly educated. एक जो साधु मैंने देखा है, IITN, MTech. He went around the whole India without taking any penny. ब्रह्मचारी है वो, पूरा इंडिया में सब जगह पे, सब जगह कुछ नहीं पैसा उसके पास, पूरा जगह जाके आया वो, ऐसे ही पूरा साल हर जगह जा जाके, एंड ही survived very nicely without any money. Can you imagine in today's times? नहीं, नहीं लगता ना, डाइजेस्ट नहीं होती बात, है, होता है। So the point is that निष्काम कर्म योगा level, a very difficult one to achieve, but there are निष्काम कर्म yogis. अब उसके ऊपर क्या है, that's my question. ध्यान योग, So ध्यान एंड ध्यान, okay, so now why dhyana yoga? because you want to study and contemplate. Okay, very nice. But why do you want to study and contemplate? जब तुम already निष्काम कर्मी योगी हो तो, To reach to the higher states. which is the highest? So one, Bhakti yog, What is that? bhakti yog. Bhakti. Okay. So bhakti, what is bhakti? भक्ति और निष्काम कर्मियों में फर्क क्या है? Good question. That is the what you call reason why there are multiple layers in the between. so So yeah. one thing we had identified about Nishkam Karma Yoga is
that you are not attached to the fruits of the service, but you are attached to the position. वेरी नाइस. Hmm. सो निष्काम कर्मयोगी सब Hmm. करे, लेकिन वो वही करेगा जो उसको अच्छा लगता है. बात समझ रहे हो? मुझे ये करना है, मैं ऐसे करूंगा. अब टेल मी वन थिंग, कौन है ऐसा इन दिस वर्ल्ड, ऐसा जो अपने हिसाब से नहीं, किसी और के हिसाब से चलता है नॉर्मल वर्ल्ड में? डिवोटी को छोड़ो. Prime Minister. अरे नहीं यार. आई डोंट एग्री. यू एग्री? Vote bank politics, he has to. I mean, for showing, he will, for showing, the politician will show that yes, but ultimately they will do what they want to do, right? एकदम practically जो मतलब वही करेगा जो हम लोग. कौन होता है वो ऐसा? Not Shishya of a Guru. Yes, yeah, but what is the Karma aspect that surrender. drives? Okay, so let's come back. What is that aspect which lets us do? So शिष्य गुरु तो है, वो तो बहुत हाई. अगर सच्चे शिष्य और गुरु हैं तो वो सरेंडर्ड है. लेकिन उससे अगर हम लोग मटेरियल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उसमें कौन है ऐसा फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग जो वही करता है जो दूसरा बोलता है हमेशा जिससे दिल उसको से? कुछ चाहिए होता है, हाँ जिससे उससे कुछ चाहिए होता है। हाँ, वो तो अंडरस्टैंडेबल बिजनेस है वो, कि मैं करूंगा, बदले में मेरे को ये चाहिए, अंडरस्टैंड. लेकिन बिना उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए. लेकिन या बच्चा मम्मी की बात सुनता है. हाँ, बच्चा मम्मी की बात इंस्ट्रक्शंस में सुनता है, बिकॉज उसको भी यही है कि मैं सेफ हूँ. Hmm. राइट, दैट्स व्हाट द फीलिंग इज. माँ बच्चे के लिए करती है विदाउट एनी Returns. रिटर्न्स. Yeah, वो parents. Yeah. क्यों करती है? दैट्स द पेरेंट्स नहीं, माँ. Okay. अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली ये फैक्ट है. तो माँ का जो प्रेम है ना, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप मोस्ट. सो क्या है वो जो चीज ये करती है विदाउट एनी रिटर्न्स, काम करवाती है? व्हाट इज दैट? Higher taste. Love. हाँ, नाउ यू हिट इट द राइट नेल. प्रेम. प्रेम. Unconditional love. So that is mother. Even if someone loves someone, you know, madly, वो करता है जो उसका लवर बोलता है उसको. हरदम के लिए नहीं, I can't say, लेकिन he does that when someone is in love. He does that or she does that. Agree, not agree? So prema is the aspect. Now what is this understanding? This is ज्ञान. कि ये समझ में आए कि मैं अपनी पोजीशन से हटके भी लोअर लेवल पे काम करना चाहिए मुझे. इसके लिए मुझे ज्ञान चाहिए. दैट्स व्हाई ज्ञान योग. दैट मीन्स देयर इज समथिंग अबव निष्काम कर्म योग which helps you detach from the position also, Yes. from your position. That is ज्ञान. तो वो ज्ञान लेने के लिए ज्ञान योग. अब उसके ऊपर क्या है? टू रीच ऑफ कोर्स द टॉप मोस्ट लेवल, व्हाट इज द भक्ति? वो क्या है? वो प्रेम है. प्रेम किसके लिए? What are we talking about? ये सारा खिचड़ी क्यों पका रहे हैं? To serve the Lord, the prema for the Lord. That is a very high taste. I mean, very high stage. Okay, so what is above jnana? ध्यान. What is now? What is dhyana? अब ज्ञान तो आ रहा है, लेकिन ध्यान क्या है? अभी वो एनालिसिस खत्म, सीता ओनली मेडिटेशन. हाँ, so he's absorbed. Dhyana means absorption. Absorption समझते हो क्या होता है? कंप्लीटली इन्वॉल्व इन इट. Exactly. दिन रात वही घुसा हुआ है उसमें. ये absorption है. See, there is a difference when you say in the level of, when there is a company or a business, उसमें ऊपर का जो बंदा है वो पूरा absorbed होता है. That's why he gets paid more, right?
नीचे इतना एब्जॉर्प्शन नहीं है, नीचे काम है, वर्क है, सब कुछ है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऊपर बहुत ज्यादा होता है. It's fully involved into it. It's same like that corporate ladder. That's why this can be compared to that absorption, dhyana. Now, when that dhyana, absorption becomes so intimate, which takes the form of love, prema. अब ये सब हो गया, absorption हो गया. अब जो प्रेम है ना, it is like the cherry on top of a cake. That is explained in Brahma Samhita. Did we read that verse? Premanjana Churita. Bhakti Vilochanena. Did we read that verse? No. Okay. But we read a few verses from Brahma Samhita. Yes, yes, we So, did. so you know what is Brahma Samhita now. And we read some Venu Konanta Arvinda Dalai Taksham. So that is the morning arti as well, describing the form of the Lord. Today we'll read one verse from Brahma Samhita, which will tell us what is prema. अब ये प्रेम है ना, ये स्पेशल है. क्यों? Because it is like a very specific speciality on top of the normal behavior. वो explain नहीं की जा सकती, unfortunately. It can only be felt. प्रेम या तो होता है या तो नहीं होता है, बीच में कुछ नहीं है. There is no specifications of prema, and it can vary on people to people. You know, that's why it's very hard to explain prema. But Brahma Samhita explains that very nicely. We'll read the verse. So is this called Prema Yoga after Dhyan Yoga? Bhakti Yoga. Okay, okay. प्रेम योग तो पिक्चर है. Sorry. My bad. जोक था. प्रेम लेकिन योग नहीं, प्रेम रोग. see, he got it right. तभी अभी समझे वो क्या है और ये क्या है. There's a difference. The purity is bhakti. So bhakti, the word translation बहुत मुश्किल है. Bhakti is निष्काम कर्म योग with ज्ञान ध्यान and the last one प्रेम. अब प्रेम क्या है ना, ये अभी समझेंगे इसमें से. So the verse is from Brahma Samhita. Premanjana. I'll share my screen with you. You able to see my screen? Does it Yes, say Shri Brahma Samhita? yes, 5.38. So I'll recite, please repeat after me. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Premanjana Manja Churita Churita Bhakti Bhakti Viloch. Vilochanena Santah Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Santa Santah Santa Sadaiva Hridayeshu Lokayanti Vilokyanti Yam Shama Sundaram Achintya Gunaswarupam Yansham Yamashava Sundara Chinta Guna Sarupam Sarupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Govinda Adi Purusham Tamaham Bhajami. Bhajami. ये प्रेमांजन छुरिता पता है क्या है? छुरिता, ये वर्ड छुरिता किसमें यूज होता है? और छुरिता जो यूज किया है वो हम लोग भी यूज करते हैं. दाल में छोका मारते हैं ना, ये वो छोका है, तड़का है, तड़का. सो किसका तड़का है? टू अंडरस्टैंड, आई वर्शिप गोविंद द प्राइमरी लॉर्ड हु इज श्याम सुंदर, कृष्णा हिमसेल्फ विद इनकंसीवेबल innumerable attributes, whom यहाँ से important है. The pure devotees see in their heart of hearts with the eye of devotion, tinged, ये है चौका, ये है Tinged. चौका लगा के, with the salve of love. salve क्या है? ये वही पानी है जो पानीपुरी को देख कर आता है मुंह में.
ये सलाइवा बोलते हैं ना जो उसे, तो अगर भगवान को देखकर वैसा प्रेम आता है, ऐसा अटैचमेंट कि लार टपकती है हमारी, उसका नाम लेने में, उसकी सेवा करने में, ये जो फीलिंग अगर आती है ना किसी में, वो प्रेम भाव है. If a male and a female or boy or girl feel in love with each other, वैसा ही अट्रैक्शन जो बहुत कम होता है, टेम्पररी होता है, अनफॉर्चुनेटली it is there for some time, not always. Very difficult to have that continuous kind of a love thing. So that kind of an attraction where you don't feel of having anything else but your lover, that kind of an attraction for the Lord, tinge of love, that is prema. Very difficult, but if someone has that quality, that is called pure devotee of the Lord. भक्त उसको बोलते हैं, डिवोटी उसको बोलते हैं. सिर्फ कंठी माला टीका लगाने कुर्ता से डिवोटी नहीं बनेगा, ये क्वालिटी चाहिए, very high. So I'll share my screen with you on the yoga ladder, which is, tell me once you are able to see my screen, the yoga ladder. Can you see my screen? So can you see the bottom part, non-scriptural enjoyment? Yes. Then karma kanda, which is scriptural enjoyment. Then you have semi-detached verb, sakama karma yoga, nishkama karma yoga. Then jnana yoga, which is no work but analysis as to how can I go above the ladder. Then no work, meditation, dhyan, absorption, and then spirit of devotion, bhakti yoga, which involves prema. So all this below is karma kanda. The middle one, which involves jnana and analysis, is called jnana kanda. The bhakti is called upasana kanda. ये 3 levels है जिसमें हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं. Ultimately doing anything for a higher purpose. This is your yoga ladder. So this is the section of the whole yoga ladder from verses 11 till 16. Please read these verses. We will go through these verses very quickly next time, not today, but we will reach up till 16 next time. So all of you, please read these verses. They will relate to whatever we have discussed. Prabhuji, Okay. why it is called meditation? Mechanical meditation, because it does not involve prema. Okay. Yeah. So meditation focused एकदम होके बैठे, लेकिन वो फोकस में प्रेम नहीं है, इसलिए मैकेनिकल है वो. You are trying to control your senses, everything in a robotic तरीके से. इमोशन नहीं है उसमें. वो इमोशन तड़का है. दाल बहुत टेस्टी है लेकिन तड़का नहीं है उसमें, तो मजा नहीं आता. वो मजे के लिए ना प्रेम चाहिए, नहीं तो काम में मजा नहीं आएगा, कुछ भी करने में मजा नहीं आएगा, डिवोशनल सर्विस में मजा नहीं आएगा. So say for example, someone serves the Lord, उसको सर्विस में इंटरेस्ट है, क्या सर्विस उसमें इंटरेस्ट नहीं है. सर्व करने में उसको मजा आता है, बस कुछ भी करूं मैं इसके लिए, उसमें मेरे को आनंद आता है. दैट इज द हाईएस्ट स्टेज. एब्जॉर्ब तो रहेगा ही वो, ज्ञान भी है उसके पास, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रेम. इज इमोशनली कनेक्टेड. वो दिखाता नहीं है किसी को ये बात. ये एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट, बहुत बड़ा सीक्रेट है ये.
इसीलिए प्योर डिवोटी मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्यों बताता नहीं है कि वो कितना प्रेम करता है, बहुत समझ पता नहीं पड़ता किसी का। ज्ञान से, उनके फोकस से, उनके एक्टिविटी से ढक जाती हैं सारी बातें, ये पता नहीं पड़ता कि हाउ मच डज ही लव द लॉर्ड। If you find that person, pure devotee, that is the Guru. That's what, why you see the instructions of Guru are so powerful. And the pure devotee, see, quality क्या है pure devotee? Do you know what is the quality of pure devotee? Who loves Krishna, loves मतलब ये प्रेम वाला, emotionally. Krishna is controlled by that devotee. So I gave you the example of that donkey part. So you see, who knows what is going to happen, but the devotee knows. And whatever he does, Krishna will support him. वो सक्सेस कर देगा उसको, ऐसा. So you should try and aim for working for a higher purpose. Okay, so I'll stop sharing now. Any questions or comments? So do you think you will read verses 11 to 16? 3.11 to 3.16? Yes, probably. Yeah, all of you? Please read them. It won't take too long. तुम दोनों फर्स्ट बेंचर हो. Okay. Yes. दो लोग की रेस में फर्स्ट आया तो Good. Kalpesh is also a first bencher. I know. he's default. He's He's always class been a first monitor. bencher. He's a He's class always been monitor. a first bencher. Even when we were in the college, he was the first bencher. Okay, so please read these 11 to 16, I think 7 to 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 verses. And then we will go to the next section, which is very deep, very, very deep. It will actually touch the areas. If you want to reach that section, make sure that you read this. That section, next section of Bhagavad Gita, will touch the actual practical scenarios in your life, in your own life. Okay, वो काफी clarity लाएगा decision making में. Even you may feel the decision you are taking it is wrong, but it will turn into a right decision later. That is the power of next section. You see where we are going in Karma Yoga. Yeah. So make sure you read this section very carefully so that we can go, because this is the fundamental for the next section. ये समझ में आ गया ना पूरी तरह से, तो अगला सेक्शन बहुत क्लियर होगा तुमको, और वो सेक्शन जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Hare Thank Krishna. you. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, everyone.